have been discussing about proofs, and in last class we were discussing proof by contraposition. At times when we cannot do direct proof, direct implication को अगर हम proof ना कर सकें, we get stuck at some point. So it is quite logical to prove it by contraposition of the implication. Instead of proving implication, हम इसकी contraposition को prove करते हैं. P implies Q को अगर हमने प्रूव करना हो, so it's quite logical, it's equivalent, it's same. अगर हम not Q implies not P को प्रूव कर दें, इसकी हमने एग्जांपल ये देखी थी कि in our common thinking we often think in contrapositive way. जिसकी एक एग्जांपल हमने ये की कि जब हम एक कोड लिखते हैं जिसमें we have to check whether a number is prime or not. So हम जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है जब हम अपना एल्गोरिथम डेवलप कर रहे होते हैं, so we were developing algorithm in a contrapositive way. We have, अगर एक नंबर को चेक करना है whether it is prime or not, we have definition of prime number. If a number is prime, then it is not divisible by any other number. If a number is prime, then it is not divisible by any other number. So we want to implement this thing कि अगर एक नंबर प्राइम है तो वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता. So इसको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसको हमने इम्प्लीमेंट इस तरह किया कि अगर तो ये नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है, n remainder I is equal to 0. अगर तो ये नंबर किसी और नंबर से डिविजिबल है, then it's not prime. So हमने जो इम्प्लीमेंट की वो इसकी कॉन्ट्रापोजिशन है. हमारे पास इम्प्लीकेशन थी if a number is prime, then it's not divisible by any other number. जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि if this number is divisible by any other number, then this number is not prime, which is perfectly fine because implication and its contraposition, they are logically equivalent. तो आप एक चीज को प्रूव कर लें या दूसरी चीज को प्रूव कर लें, it's same, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स एक ही चीज, एक ही मैसेज कन्वे करती हैं. So इसमें फिर हमने we did some examples like if 3n plus 2 is odd, then n is odd. तो हमने इसकी contraposition को implement को prove किया. Contraposition was कि if n is not odd, यानी n is even. If n is even, then 3n plus 2 is even. So contraposition को इस केस में contraposition को prove करना, it was straightforward. Similarly, when we showed if n square is odd, then n is odd. डायरेक्ट प्रूफ से हम नहीं कर सकते थे, सो हमने इनडायरेक्ट तरीके से इसको सॉल्व किया. इनडायरेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस वाज थ्रू contraposition कि if n square is odd, then n is odd. So its contraposition is if n is even, then n square is even. If n is even, then n square is even. So we showed we proved its contraposition. Contraposition की कुछ और एग्जांपल करते हैं. So we have a statement over here. If n is equal to a times b, then where a and b are some positive integers, so n is a product of two numbers a and b. Then these two numbers, these two factors a and b, these are factors, so these are less than equal to n. A is less than equal to n, b is less than equal to n. Obviously we know this thing कि एक नंबर इंटीजर्स की हम बात करें, सो एक नंबर अगर इसको हम फैक्टराइज करें तो उसके फैक्टर नंबर से कम ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए. लेकिन इसको हम प्रूव कैसे करें? We want to write it down in a systematic way, in a formal way about its proof. Proof को हम फॉर्मल तरीके से अगर लिखना चाहें कि this thing will always be true. So डायरेक्ट मेथड से तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, इसको हम contraposition से करते हैं. So सबसे पहले स्टेटमेंट की contrapositive स्टेटमेंट लिखते हैं. If n is equal to a times b, then a is less than equal to n and b is less than equal to n. So p स्टेटमेंट हमारी क्या है? n is equal to a times b. और q स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या है? a is less than n and b is less than equal to n. So contraposition, not q implies not p. So not q क्या होगा? A is less than n and b is less than n. इसकी negation. So this will become a is greater than n or b is greater than n. Remember, whenever we have some compound statement,
एंड या और के साथ उसकी जब हम नेगेशन करते हैं तो एंड इज कन्वर्टेड इनटू और, डिमॉर्गन्स लॉ। सो यहाँ पे एंड है, सो एंड विल बी कन्वर्टेड इनटू और स्टेटमेंट। सो नॉट क्यू स्टेटमेंट क्या होगी, ए इज ग्रेटर देन एन और बी इज ग्रेटर देन एन। और नॉट पी स्टेटमेंट, नॉट पी इज n is not equal to ab, n is not equal to ab. So we have an implication, we will write its contraposition, and then we will try to prove its this contrapositive statement. So first of all, the contraposition statement जो अभी हमने किया, so this will become if a is greater than n or b is greater than n, या तो a n से बड़ा हो या b n से बड़ा हो, then their product a times b is not equal to n, n is not equal to a times b. So given statement की contrapositive statement. अब हमारा hypothesis बन गया a is greater than n और b is greater than n. अब ये और के साथ है, so we have to see when this or is true. Remember implication के केस में अगर तो hypothesis true होगा तो फिर कंक्लूजन को भी ट्रू होना चाहिए, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव। कि हम सपोज करते हैं कि हाइपोथेसिस ट्रू है तो फिर कंक्लूजन भी ट्रू होगा। सो हाइपोथेसिस यहाँ कब ट्रू होगा, हाइपोथेसिस इज गोइंग टू ट्रू और स्टेटमेंट है या तो ए इज ग्रेटर देन एन हो, बी इज फाइन, बी इज लेस देन इक्वल टू एन हो, जहाँ बी इज ग्रेटर देन एन हो उस केस में ए इज लेस देन इक्वल टू एन हो, या फिर दोनों ही ग्रेटर देन एन हो, ए इज ग्रेटर देन एन, बी इज ग्रेटर देन एन। सो हमारे पास P स्टेटमेंट के अंदर दो कंडीशंस हैं, A इज ग्रेटर देन n और B इज ग्रेटर देन n। इन दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी ट्रू हो गई तो ये हाइपोथेसिस ट्रू होगा, या दोनों ट्रू हो गई देन ऑब्वियसली इट इज ट्रू। सो हाइपोथेसिस इज ट्रू व्हेन A इज ग्रेटर देन n, B इज लेस देन n। या तो इस तरह की चीज हो हमारे पास, या A इज लेस देन इक्वल टू n, B इज ग्रेटर देन n, इस तरह की चीज हमारे पास आ जाए, या ये दोनों ही बड़े n से बड़े हों। सो पहले दोनों केस में देखें दे आर जस्ट सेम, ए और बी का रोल इंटरचेंज हो गया और कुछ भी नहीं हुआ। सो अगर हम इनमें से किसी एक को भी प्रूव कर लें तो दूसरा ऑब्वियसली प्रूव हो जाएगा, एंड वी विल सी कि थर्ड इज आल्सो आई मीन स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो हम पहले जो दो हैं, पहली जो दो कंडीशंस हैं, ए इज ग्रेटर देन एन, बी हमारे पास अगर लेस देन इक्वल टू एन हो, इसको प्रूव करते हैं, और अगर इन ए और बी का रोल इंटरचेंज कर लें तो वी विल गेट दिस सेकंड कंडीशन। सो इट्स इनफ टू जस्ट शो वन ऑफ दीज, ए इज ग्रेटर देन एन एंड बी इज लेस देन इक्वल टू एन। ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, बी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, बी की मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, जो मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर है दैट इज 1। सो अगर हम एक्सट्रीम केस देखें, बी की वैल्यू हम 1 कर लें, इफ बी इज इक्वल टू 1 और ए को हम लेते हैं कि इट्स सम नंबर ग्रेटर देन एन, जो भी नंबर है, सम नंबर ए इज ग्रेटर देन एन एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 1, देन व्हाट विल बी देयर प्रोडक्ट, ए टाइम्स बी। ए टाइम्स बी जो भी होगा, अब ए की वैल्यू n से बड़ी है, सो इट मींस देयर प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन n टाइम्स b की वैल्यू 1 है, n टाइम्स 1, सो a टाइम्स b इज ग्रेटर देन n टाइम्स 1, so it means a times b is greater than n. So we just express it more properly. So this means a times b is greater than n. A times b is greater than n times 1, so this means a times b is greater than n. Greater than n, it means it's not equal to n. So a times b is not equal to n, and this is what we were going to show, that n is not equal to a times b. So n is not equal to a times b. A times b is greater than n. Similarly, second case में if a is less than equal to n, so a की minimum value क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, और b is greater than n. So 1 times n, a times b is greater than 1 times n, means a times b is greater than n. So it's not equal to n. तीसरे केस में a is greater than n, b is greater than n, so obviously their product will be not only greater than n, it will be greater than n square, because a is greater than n, b is greater than n, so a times b is going to be greater than n square. So
अगर a times b is greater than n square, so obviously it's greater than n as well. So it's not equal to n. A times b is not equal to n. So in all three cases, a times b is not equal to n. So if a is greater than n or b is greater than n, then n is not equal to ab. So if this contraposition is true, so it means our main implication that if if n is equal to ab, then a is less than equal to n, b is less than equal to n. That is also true. So अगर हमने contraposition show कर दी, तो it means main implication भी true है. So these were some examples of contraposition. Our next topic, next way of proving is proof by cases. इसको हम exhaustive proofs भी कहते हैं. Exhaustive proofs में क्या है कि हमारे पास जितने possible cases हो सकते हैं, we check all those possible cases. For example, if we have finite domain set, हमारा जो domain set है, जिस set के अंदर हम काम कर रहे हैं, वो finite है. It may have 10 elements or 100 elements or 1000 elements or maybe 1 million elements. So इस तरह के सेट में it is possible कि हमें जो भी statement दी हुई हो, अगर तो हम generalized proof वो एक कर सकें using the definition, that's the best thing. अगर हम ना भी कर सकें, तो जितनी भी values हैं, we can simply write down a program if we have like values more than which we can handle on paper. So we can just write down a program and we can check one by one all possible cases. हम तमाम possible cases के लिए check करें, so we can say yes, it's true for this domain set. अगर for example आपके पास domain set is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and someone says that all these numbers are less than square of 4. Square of 4 is 16. So इस domain set के अंदर जितने भी elements हैं, these are less than 16. तो हम एक एक एलिमेंट को कंपेयर करते हैं 16 से, या all these elements are less than 16. So this statement is true that the numbers in this set are less than 16. या इस तरह की कुछ और हम examples देख सकते हैं. So proof by cases में we check all cases one by one. These cases could be elements in our domain set, या ये भी हो सकता है कि हम अपने domain set को divide कर दें in certain I mean we can divide it into certain fractions के certain parts कि ये हमारी जो statement है इस part के लिए भी true हो रही है, इस part के लिए भी true हो रही है, इस part of our domain set के लिए भी true हो रही है. तो हमने तमाम possible cases check कर लिए, तमाम possible scenarios check कर लिए, so it's always true. So it's exhaustive proof because we exhaust all the possibilities, we check all the possibilities. So when we are going to show our implication P implies Q, so it means we have to show P and it should not be or, it should be and. Yeah, it should be and symbol here. So अगर हमारे पास P के अंदर हमारे पास different cases हैं, P1, P2, P3, P up to Pn, so we can check it for all possible cases. P1 के लिए भी check कर लें, P2 के लिए भी check कर लें, P3 के लिए भी check कर लें, Pn के लिए भी check कर लें, that all these cases give us a conclusion Q. So हम तमाम possible cases को check कर लेते हैं. So let's do some examples of this proof by cases. So first example is कि हमारे पास ये statement है कि n plus 1 cube is greater than 3 raised power n is greater than equal to 3 raised power n for all values of n less than equal to 4. Positive integers की बात हम करते हैं या non-negative integers की बात करते हैं. So n की वैल्यू हमारे पास 0 से लेके 4 तक है. n plus 1 cube is greater than equal to 3 raised power n. हमारे पास कितने integers हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 integers हैं. We can check one by one. I mean, for this we don't need to use any kind of like theorems or anything. We can just check one by one. इसको तो हम paper पे भी कर सकते हैं. अगर हमारे पास domain set का size बड़ा हो तो हम we can easily write down a program as well. इसके लिए भी हम program लिख सकते हैं. So let's see how to do it. So n की value क्या है? 4 तक जाती है. So we define our n is 0, 1, 2, 3, 4. हम 4 तक के लिए check करते हैं.
सो जब n की वैल्यू 0 है तो n plus 1 cube is 0 plus 1 cube. So 1 cube, 0 plus 1 is 1. So 1 cube is 1. 3 raised to power 0 is 1. So 1 is equal to 1. So हमारा जो given statement है उसमें equality भी है. So 1 is equal to 1. So it is true. The statement, the claim is true. When n is equal to 1, then 1 plus 1 is 2. 2 cube is equal to 8. 2 cube is equal to 8. On right hand side, 3 raised to power 1 is 3. So 8 is greater than 3, though that is true. 8 is greater than 3. Next is 2, n की value 2 है, so 3 raised to power 2 plus 1 is 3. 3 raised to power 3 is 27, and 3 raised to power n, 3 raised to power 2 is 9. So 27 is greater than 9, so our claim is true. When n value of n is equal to 3, so 3 plus 1 is equal to 4. 4 cube is 64. Right hand side, 3 raised to power 3. 3 raised to power 3 is 27. So 64 is greater than 27. That's true. N की value अगर 4 है तो 4 plus 1 is 5. So 5 cube is 125. 3 raised to power 4 is 81. So 121 is greater than 81. It's true. So n की value 0 से लेके 4 तक तमाम values के लिए ये expression n plus 1 cube is greater than equal to 3 raised to power n is true. So this statement is true. जरा चेक करते हैं कि अगर n की वैल्यू 4 से ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा. ये जस्ट हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए चेक करें कि क्या इसके बाद भी ये स्टेटमेंट ट्रू चलती रहती है या उसके बाद ये स्टेटमेंट नहीं वैलिड नहीं रहती. सो वी सी n की वैल्यू जब 5 होती है, सो 5 plus 1 cube, 6 cube is going to be 2 raised to power 16. 2 raised to power 6 raised to power 3 is 216. 216. So 216 or 3 raised to power 5 is 243. So 216 is less than 243. So this is false. So it means जो हमारी स्टेटमेंट है जो गिवन रेंज है उसके अंदर तो ठीक है, उसके बाद ये चीज ठीक नहीं रहती. यहाँ इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट टू नोटिस कि n plus 1 क्यूब है. सो दिस इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल फंक्शन. n की पावर एक फिक्स पावर है, n की वैल्यू बढ़ती जाती है जबकि पावर उसकी सेम रहती है. दूसरी साइड पे 3 raised to power n है. 3 raised to power n is an exponential function. 3 raised to power n. So polynomial function versus exponential function. तो हमने देखा कि when n is equal to 4 तब तक तो polynomial function is greater than exponential, लेकिन उसके बाद exponential function outgrows polynomial function. exponential function बहुत तेजी से ऊपर जाएगा. 3 raised to power 5 हमने देखा, 3 raised to power 6 देखेंगे, 7 देखेंगे, तो ये n plus 1 cube से ये बहुत आगे चला जाएगा. So this is just something to remember कि polynomial function की growth आहिस्ता होती है जबकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ग्रोथ बहुत तेज होती है. पोलिनोमियल वर्सेस एक्सपोनेंशियल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आउटग्रोथ पोलिनोमियल फंक्शन. ये जस्ट फॉर यू जनरल नॉलेज. Let's do another example. This is quite simple. The statement, given statement is only consecutive integers which are perfect powers less than 100 are 8 and 9. 100 तक जो परफेक्ट पावर्स हैं उनमें से सिर्फ 8 और 9 ऐसे नंबर्स हैं विच आर कंसेक्टिव. उसके अलावा हमारे पास कोई कंसेक्टिव इंटीजर्स नहीं आते. परफेक्ट पावर्स, रिमेंबर, दोज नंबर्स विच आर पावर ऑफ सम अदर नंबर. किसी के क्यूब हैं, किसी के स्क्वायर हैं, या किसी के पावर 4 है, पावर 5 एंड सो ऑन. सो अप टू 100 कितनी हमारे पास परफेक्ट पावर्स होंगी? थोड़ी सी हैं. सो वी कैन लिस्ट डाउन ऑल दोज परफेक्ट पावर्स. हमारे पास तमाम पॉसिबल केसेस आ जाएंगे एंड देन वी कैन सी कि उसमें से कंसेक्टिव नंबर्स कौन कौन से हैं. 8 और 9 तो ऑब्वियसली कंसेक्टिव नंबर्स हैं. क्या उसके अलावा भी हैं? अगर उसके अलावा भी कोई कंसेक्टिव नंबर होंगे तो ये क्लेम गलत हो जाएगा. वी विल हैव ए काउंटर एग्जांपल. अगर सिर्फ 8 और 9 ही कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, उसके अलावा कोई भी ना हो, देन दिस क्लेम इज ट्रू. ओनली कंसेक्टिव इंटीजर्स which are perfect powers less than 100 are 8 and 9. Let's see. So we can check one by one all perfect powers less than 100. So we make a list of these. 1 is perfect power, 1 square, 1 cube, 1 raised to power 4, 1 की कोई भी पावर ले ले.
So 1 is very much a perfect power. 2 square is 4. So 4 is perfect power. Then next number is 8, 2 raised per 3, 9, 3 square. So 8 or 9 are consecutive. So let's see कोई और भी हमारे पास consecutive integers हैं, consecutive powers हैं इस तरह की. 9 के बाद perfect power हमारे पास 2 raised per 4 या 4 raised per 2, 16 आती है. 2 raised per 5, 25, 3 raised per 3, 2 raised per 5, 32. 36 is 6 square, 7 square is 49, 64 is 8 square या 2 raised per 3 भी कह 6 भी कह सकते हैं, तो 4 raised per 3, 3 raised per 4 is 81 या 9 square, 10 square is 100. I think I didn't miss any perfect power. So we have only these few perfect powers which are less than, हमने 100 को भी लिख लिया, less than equal to 100. इनमें कंसेक्टिव इंटीजर्स हमारे पास सिर्फ 8 और 9 है, और कोई भी कंसेक्टिव इंटीजर्स नहीं है परफेक्ट पावर्स में. सो द क्लेम इज ट्रू दैट only 8 or 9 are those numbers which are perfect power less than 100 and they are consecutive integers. इसके अलावा हमारे पास और कोई नंबर नहीं है. Let's do another example. So this statement says, the statement says there exists an irrational number so there exists two irrational numbers x and y such that x raised per y is rational. हमारे पास दो ऐसे irrational नंबर हो सकते हैं x और y कि अगर हम x raised per y लें तो वो rational हो जाए. So this is proof of existence कि ऐसी चीज exist करती है. We cannot say कि ऐसी चीज होती नहीं है. So हमें सिर्फ existence show करनी है. ये नहीं कह रहा कि हमेशा ही ऐसा होता है कि irrational raised per irrational is rational. Irrational काफी complicated अजीब से नंबर होते हैं. उनका कोई पैटर्न हमारे पास नहीं होता. We cannot show them something. So हम for all irrational numbers के बारे में हम कुछ claim करना मुश्किल होता है. So हम ये कहते हैं इस प्रॉब्लम में सिर्फ एग्जिस्टेंस की बात हो रही है कि देयर एग्जिस्ट सम इरेशनल नंबर. कुछ इरेशनल नंबर ऐसे हैं कि अगर हम इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर करें तो हमारे पास रैशनल नंबर आ जाएगा. सो दिस इज प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस एंड वी विल सी कि इसमें प्रूफ ऑफ केसेस भी आ जाते हैं. सो इसको हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं. हम क्या करते हैं कि हम दो इरेशनल नंबर लेते हैं, कोई से भी अपनी मर्जी के ले सकते हैं जिसको हम आसानी से हैंडल कर सकें. सबसे आसान जो इरेशनल नंबर हमारे जहन में आता है, सो दिस इज अंडर रूट 2. सो लेट्स टेक x इज इक्वल टू अंडर रूट 2. I mean under root 2 we often come across under root 2, so we just take x as under root 2. So under root 2 raised per y, दूसरा इरेशनल नंबर, तो दूसरा इरेशनल नंबर भी हम under root 2 ही ले लेते हैं. दोनों अंडर रूट 2 ले लें तो x raised per y क्या होगा, अंडर रूट 2 raised per under root 2. So this is some strange kind of creature, this kind of strange kind of number, under root 2 raised per under root 2. शायद हम कैलकुलेटर या कंप्यूटर के ऊपर पावर लें तो हमारे पास कुछ आ जाए, लेकिन on paper we cannot do anything. So under root 2 we don't know whether it's rational or irrational. We cannot say anything about it. although हमारी फीलिंग ऐसा है जो हमारा दिल कह रहा है कि ये इरेशनल ही होना चाहिए, but I mean in proofs we have to show it. We cannot say कि I feel like this. We have to show it. So under root 2 raised per under root 2 we cannot say whether it's rational or irrational. At this point we cannot say. So लेकिन होगा क्या, या तो ये रैशनल होगा जो इरेशनल होगा. इन दो के अलावा कुछ और चीज तो नहीं हो सकती. जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो या तो रैशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं. सो वी हैव टू पॉसिबल केसेस. इट विल बी आइदर ए रैशनल नंबर और इट विल बी इरेशनल नंबर. या तो ये रैशनल होगा जो इरेशनल होगा. तो ये दो केसेस हैं. इन दो केसेस को वन बाय वन देखते हैं. प्रूफ बाय केसेस का प्रॉब्लम है. सो वी हैव गॉट टू केसेस. सो वी लुक एट दीस टू केसेस वन बाय वन. कि पहला केस ये है कि अंडर रूट 2 रेस्ट पर अंडर रूट 2 is going to be a rational number, and second case is under root 2 raised per under root 2 is going to be an irrational number. Let's see. So we have two cases that it will be a rational number or it will be an irrational number. So suppose कि ये हमारे पास जो नंबर है
it's going to be a rational number. So under root 2 over under root 2 is a rational number. अगर तो ये रैशनल नंबर है तो यही तो हमने शो करना था कि x raised per y is rational number. So that's why we were going to show that under root 2 over under root 2 irrational raised per irrational is a rational number. So अगर तो under root 2 over under root 2 this is a rational number. So this is what we were needed to show. So we are done. अगर तो ये rational है, so we have found two irrational numbers जो एक दूसरे की पावर हो तो वो rational number है. So it means there exists something. ये तो एक केस है कि अगर तो ये rational है, हो सकता है ये rational ना हो, फिर क्या होगा? So other cases, what if under root 2 over under root 2 is irrational? So x over y, x raised per y is an irrational number. So हम फिर ऐसा करते हैं कि जो हमने शुरू में किया था कि एक irrational number raised to दूसरा irrational number, जो हम पहला irrational number है उसको हम under root 2 power under root 2 ही ले लेते हैं. x raised to power y को हम पहला irrational number ले लेते हैं. अगर ये irrational है तो इसी को हम पहला irrational ले देते हैं और दूसरा irrational number उसको हम फिर under root 2 ही ले लेते हैं. Let's say this is also under root 2. So we take x raised per y, x raised per y as first irrational number and under root 2 as second irrational number. X raised per y क्या है? ये under root 2 raised per under root 2 है. So under root 2 raised per under root 2 अगर तो irrational है तो हम इसको पहला irrational number ले लेते हैं और एक बार फिर under root 2 लेके उसको हम दूसरा irrational number ले लेते हैं. फिर क्या होगा? Let's see. So अगर तो हमारे पास under root 2 raised per under root 2 irrational है, so we take x raised per y as first irrational number and under root 2 as second irrational number. So this is irrational number. हमने कहा x raised per y is irrational है. Under root 2 का हमें पता है irrational है. So irrational number raised per irrational number. ये कहा गया ना कि दो नंबर हैं कि एक नंबर को दूसरे की पावर मिला है तो वो rational होगा. So let's see. So irrational number raised per under root 2, irrational number raised per irrational number. X raised per y की वैल्यू हमें पता है under root 2 raised per under root 2 है. Under root 2 raised per under root 2 और फिर इस सब की पावर under root 2. अब under root 2 भी पावर में है, under root 2 भी पावर में है, दोनों square roots पावर में है, so they will get multiply. Square root 2 into square root 2 is equal to 2. Square root 2 का square हो गया ना, so square root गायब हो जाएगा, so square root 2 into square root 2 is 2. So we'll get square root of 2 raised per 2. So again square root और square आपस में cancel हो जाएंगे, we will get 2. 2 तो a rational number है, so we know that 2 is a rational number. So it means irrational number raised per irrational number is a rational number. So it means there exists some irrational numbers such that उसको उन दोनों को अगर हम exponent की शक्ल में लिखें, x raised per y की शक्ल में लिखें, so we will get a rational number. I will summarize this again. हमारा problem क्या था? We need to show कि कोई ऐसे दो irrational number exist करते हैं such that x raised per y is equal to a rational number. X raised per y is equal to a rational number. So हमने कहा कि हम दो irrational number लेते हैं, under root 2 ले लेते हैं दोनों को, under root 2 और x भी under root 2 है, y भी under root 2 है. Under root 2 raised per under root 2 क्या होगा? We don't know whether it's rational or irrational. लेकिन होगा तो इन दोनों में से कोई एक केस होगा. अगर तो under root 2 raised per under root 2 rational है, then we are done. This is what we needed to prove कि under root 2 over under root 2 raised per under root 2 irrational number raised per irrational number is a rational number. So अगर तो ये rational number है, so we are done. We were asked to show this thing कि ये exponent rational आता है और अगर ये rational नहीं है तो फिर ये irrational होगा. Okay, fine. अगर तो ये irrational है, so let's take x raised per y as our first irrational number and square root of 2 as second irrational number. And then what happens? We take x raised per y raised per square root 2 irrational number raised per irrational number. So अब क्या होगा?
x raised per y is square root 2 raised per square root 2, and this whole thing raised per square root 2. So square root 2 into square root 2 is 2, सिंपल 2 आ गया हमारे पास, और जो हमारे पास इंडेक्स है that is square root of 2. So square root of 2 का square, so square और square root of 2 आपस में cancel कर देंगे, they are opposite operation to each other, we will get 2 as answer. So 2 is a rational number, we know. So in short, there exist such irrational numbers कि अगर हम एक irrational number raised पर दूसरा irrational number करें, so we will get a rational number. So this is also called proof of existence, that we were going to show कि ऐसी चीज exist करती है, ऐसी चीज exist करती है. Let's do one more example. Proof of cases. The statement is, if n is an integer, then n square is greater than equal to n. If n is an integer, then n square is greater than equal to n. N integer है, so it could be some positive integer, it could be negative integer, it could be 0, neutral integer. So if it is n is if n is positive integer, so n is positive. n हमारे पास positive integer है, तो n square obviously it should be greater than n. So if n is greater than n, so n square हमारे पास क्या होगा? N square is equal to n times n. So n times n. So दोनों ही n क्योंकि 0 से बड़ा है, so n भी 0 से बड़ा है, दूसरा n भी 0 से बड़ा है, so this is going to be greater than 0. So n square is greater than 0, or it is greater than n, rather. Greater than 0 तो होगा greater than n, क्योंकि n times n है, so it is greater than n. So n square is greater than n. तो दूसरा केस क्या है हमारे पास कि n is equal to 0. So n is 0, so we can write it down. N square is going to be 0 times 0. 0 times 0 times 0, which is 0. So this is equal to n. n की वैल्यू हमने रखी 0, so n square is equal to 0. So the statement, our claim is still true. Okay, n square is greater than equal to 0. पहले केस में it was greater, दूसरे केस में n is equal to 0 के केस में it's going to be equal to n. तीसरे केस देखते हैं, when n is negative. So over here n is negative. So negative numbers के बारे में we know negative into negative is going to be a positive number. So negative into negative is going to be a positive number. So if we take n square, so n square is going to be n times n. N is less than 0. N times n, like इनका product is going to be positive. N times n, negative number into negative number is greater than 0, so it means it's greater than n as well, because n is negative number, because n is negative number. So obviously n square अगर 0 से बड़ा है तो 0, n से बड़ा है, so n square is greater than n. So this statement हमारी कि if n is some integer, it could be positive, negative or neutral integer, then n square is greater than equal to n. It's true. हमने इसको डिवाइड कर लिया अपने प्रॉब्लम को 3 केसेस में कि if we have n is positive or n is negative, या हमारे पास क्या है, n is neutral number. So n is positive, n is negative, n is neutral, 0. So इन तीनों केसेस में n square is either greater than n, या 0 के केस में n square is equal to 0, n square is equal to n. So this statement is true. Okay, let's do this example. There is no solution in integers x and y for equation x square plus 3y square is equal to 8. हमारे पास एक equation दी हुई है, x square plus 3y square is equal to 8. क्लेम ये है कि हम इसका कोई भी इंटीजर सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते. इंटीजर सॉल्यूशन मींस
एक्स और वाई की कोई ऐसी इंटीजर वैल्यू जो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हो, एक्स स्क्वायर प्लस 3y² इज इक्वल टू 8 को सेटिस्फाई करती हो. सो देयर कुड बी नंबर ऑफ वेज टू चेक दिस थिंग. सो हम चूंकि प्रूव बाय केसेस कर रहे हैं तो हम तमाम पॉसिबल केसेस चेक कर लेते हैं, तमाम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई चेक कर लेते हैं. 8 is not a big number, so we can just check x और y की तमाम values such that whether they will become equal to 8 or not. So हम छोटी values से शुरू करेंगे. So x square plus 3y² की value 8 से कम होगी obviously, and we keep on increasing values of x and y. अगर तो वो 8 से बढ़ गई, x square plus 3y² is equal to 8 से x square plus 3y² की value 8 से ज़्यादा हो गई, so it means we do not have any solution. So we will check कि कहीं पे equal to 8 आता है कि नहीं आता. So again we can make a table for this thing. Value of x, value of y, value of x square plus 3y². तो क्या ये 8 के बराबर आती है कि नहीं आती? So we just make a table of it. So value of x, x और y दोनों की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं. So x square plus 3y² is equal to 0. It is less than 8. So अब हम एक वैल्यू बढ़ाना शुरू कर देते हैं. हम y की x की वैल्यू फिक्स रखते हैं, y की वैल्यू बढ़ाते हैं. इट्स जस्ट लाइक ए नेस्टेड फॉर लूप. एक लूप आपका x पे लगा हुआ है, दूसरा लूप आपका y पे लगा हुआ है. सो हमने x की वैल्यू फिक्स रखी, y की वैल्यू बढ़ाते हैं, y की वैल्यू 1 हो गई. सो x square plus 3y² 0 square plus 3 into 1 square. So this is equal to 3, still less than 8. Y की वैल्यू 2 कर दें. So 0 square plus 3 times 2 square. 2 square is 4, so 3 times 4 is 12. So we get 12. So हमारी वैल्यू 8 से बढ़ गई. So it means x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू 0, 1, 2 तक हमें कहीं पे भी सॉल्यूशन नहीं मिला. पहले इसकी वैल्यू लेस देन 8 थी, फिर 8 से बढ़ गई. So let's check for other value of x. x की वैल्यू हम बढ़ा के 1 कर देते हैं. Value of x is 1. y की वैल्यू फिर हम शुरू से 0 से स्टार्ट करते हैं. y की वैल्यू इज y की वैल्यू हमारे पास 0 है. सो 1 square plus 3 times 0 square is 1. It's less than 8. 1 square plus 3 times 1 square. So this is going to be 4. 1 plus 3 is 4. It's less than 8. 1 square plus 3 times 2 square. 1 plus 12 is going to be 13. So एक बार फिर हम 8 से आगे बढ़ गए. So it means we couldn't hit a solution. x की वैल्यू हम अब फिर चेंज करते हैं. x की वैल्यू 2 कर दें, y की वैल्यू 0. So 2 square is 4 plus 0 4. We are still less than 8. y की वैल्यू 1 कर दें. So 4 plus 3 times 1. So 4 plus 3 is 7. Still we are less than 8. Increase value of y again. So 2 square plus 3 times 2 square. 4 plus 12 is 16. So again, we have crossed 8. We couldn't hit 8. x की वैल्यू और बढ़ाएं, 3 कर लें, y की वैल्यू 0 है. 3 square is 9, so it's already more than 8. So it means we couldn't hit a solution. We couldn't reach to a solution. So हमारे पास solution नहीं मिलता. So there exists no solution in integers x and y for equation x square plus 3y square is equal to 8. We have checked all possible scenarios. तो पहले हमारे पास x square plus 3y square की वैल्यू 8 से कम होती है और फिर वो एक्सीड कर जाती है. So लेकिन कहीं पे भी वो equal to 8 नहीं आती. So this is proved by cases in which we are checking all possible cases, all possible scenarios where we can check whether solution exists or not. So proof by cases या exhaustive proof में in short होता क्या है कि हमारे पास जितने भी possible scenarios हैं उन सब को हम one by one check कर लेते हैं. अगर तो डोमेन सेट की बात है, डोमेन सेट अगर फाइनाइट है फॉर एग्जांपल, तो हम इट इज पॉसिबल कि हम तमाम वैल्यूज के लिए वन बाय वन चेक कर लें. अगर तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा है तो वी कैन ऑलवेज राइट डाउन ए कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर इट. सो यस, कभी इस तरह होता है कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज आ जाते हैं तो हम तमाम सिनेरियोज को चेक करते हैं. जिस तरह जहाँ पे ये प्रॉब्लम था इरेशनल नंबर इज पर इरेशनल नंबर इज रैशनल, इसमें हमारे पास दो सिनेरियोज आ गए थे.
तो उन दोनों सिनेरियोज को हमने वन बाय वन चेक कर लिया था। जहाँ दूसरे प्रॉब्लम में हमारे पास 3 सिनेरियोज थे, जहाँ पे तीनों सिनेरियोज को हमने वन बाय वन चेक कर लिए, तीनों केसेस को हमने वन बाय वन चेक कर लिए। सो दिस इज कॉल्ड प्रूफ बाय केसेस।